Okay, students, we are starting question number 11 from the past paper of coordinate geometry. In this question, there are three points. 3 points A, B, and C are such that B is the midpoint of AC. First, अगर एक डायग्राम हम यहाँ पर बनाएं, 3 points and B is the midpoint of AC. Here it is A, here it is C. A is 2 and small m. C नहीं है हमारे पास, and B is the midpoint of AC. B is the midpoint of AC. So what is B? N minus 6. Find the coordinate of C in terms of M and N. So let's say the coordinate of C are A and B. Okay, stop working. Just look at the board. The first part is very simple. By using the formula of midpoint x equals to x1 plus x2 divided by 2, and y equals to y1 plus y2 upon 2. What is x? X is, what is x? X is n. What is x1? 2. What is x2? A divided by 2. 2n equals to 2 plus a. And what is a? 2n minus 2. Any confusion? Clear? What is y? Minus 6 is y equals to, what is y1? M. What is y2? B divided by 2 minus 12 equals to M plus B. And what is B? Minus 12 minus M. Any confusion? So these are the coordinates of C in terms of M and N. Any confusion? No. Clear. The line y equals to x plus 1 passes through C, perpendicular to AB. Passes through C, perpendicular to AB. And the equation of the line is y equals to x plus 1. We need to calculate the value of M and N. There are two unknowns. जब भी दो unknown होंगे, unknown calculate करने के लिए we must have two equations. अब आप देखिएगा जरा, in the second part, क्या y equals to x plus 1 इस लाइन पर पॉइंट सी हमें नजर आ रहा है. अगर कोई पॉइंट लाइन पर हो, उस लाइन की इक्वेशन में x की जगह पर उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट, y की जगह पर उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट रखे जा सकते हैं. व्हाट इज मींस y की जगह पर b, x की जगह पर a प्लस 1. एंड व्हाट इज b? b इज minus 12 minus m equals to, what is a? 2n minus 2 plus 1. Now अगर m को मैं राइट साइड पर लेकर जाऊं, so 2n plus m, what is this? Minus 2 plus 1, minus 1 जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो it will be minus 11. So the equation is 2n m plus 2n equals to minus 11. This is equation 1 for finding out M and N. Is this clear? Clear? That's great. How can we calculate the second equation? What is the gradient of this green line? The gradient of the green line is 1. The gradient of green line is 1. And if we
calculate the gradient of the line AC, then it will be B minus M over A minus 2. Is it the gradient of line AC? Is it the gradient of line AC? Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Can I write gradient of AC multiply by gradient of the green line? Let's say इसको हम कहते हैं gradient of the green line mg equals to -1 because they are perpendicular to each other. And if lines are perpendicular, then the product of gradients will give you -1. So now AC is B minus M over A minus 2. Gradient of the green line is 1. लिखने की जरूरत नहीं है. Equals to -1. Can I write B minus M equals to, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो it will be 2 minus A. Can I write at the place of B -12 minus M equals to, sorry, not equals to, -12 minus M again minus M equals to 2 minus, at the place of A it will be 2n minus 2. 2n minus 2. मजीद आगे चलते हैं जनाब. So it will be -12 minus 2m equals to 2 minus 2n plus 2. 2n अगर मैं लेफ्ट साइड पर लेकर आऊं, so it will be 2n minus 2m equals to, this is 2 plus 2 4, 4 plus 12 will be 16. 2 कॉमन लेकर अगर डिवाइड कर दिया जाए, so n minus m equals to 8. What is the value of n? 8 plus m. Substitute the value of n in equation 1. So m plus twice 8 plus m equals to -11. M plus 16 plus 2m equals to -11. 2m plus m is 3m. 16 minus 11 will be, sorry, 16 plus 11 will be 27 with minus sign. And what is the value of m? The value of m is -9. And what is the value of n? The value of n is -1. m और n दोनों की values आ गई. Any confusion? Yes. Where? This one? This one? Okay. Actually, we know that green line is perpendicular to the line AC. So what is the gradient of green line? It is 1. And what is the gradient of AC? It is B minus M over A minus 2. Product of the gradients for perpendicular lines will give you -1. So it will be gradient of AC into gradient of green line is equal to -1. What is the gradient of AC? B minus M over A minus 2. What is the gradient of green line? It is 1. इस बात से हमने लिखा नहीं यहाँ पर. यहाँ से आप. Is this clear? Okay. What is the value of B? The value of B is -12 minus M. Actually, this is the value of B, and minus M is written over there. The value of B is -12 minus M. Right? That's why 2 negative M are here. Is this clear? Any confusion? Any confusion? Boys? Girls, clear? Okay, students, question number 12 from the past paper of coordinate geometry. The line with gradient -2 passing through 3t, 2t passing through P intersects x-axis at A, y-axis at B. Find the area of the triangle. Okay. First, we have to sketch a simple diagram
first we have to sketch a simple diagram. Let's say this line, the line with gradient -2, passing through the point P, intersect the x-axis at A and y-axis at, x-axis at A and y-axis at B. Find the area of the triangle AOB. O is origin here. The line with gradient -2. Gradient of the line is -2. And the line passes through P with 3T and 2T. अब आप देखिए, how can we calculate the area? But we have to calculate the area in terms of T. We have to calculate the area in terms of T. Now, तो आप देखिए, how can we calculate the area? Area calculate करने के लिए we must have the coordinates of A and B. Area calculate करने के लिए we must have the coordinates of A and B. A और B के coordinates आ जाएंगे तो हम area calculate कर सकेंगे, otherwise हम area calculate नहीं कर सकते. How can we calculate the coordinates of A and B? Any idea? उठाने के लिए बोला. Now, AB, first we have to calculate the equation of the line AB. Okay? So, can I say that the gradient of the line is -2 and the coordinate from where the line crosses is 3T and 2T. So by using the formula y minus y1 equals to m x minus x1, y minus what is y1? 2T equals to the gradient. What is gradient? -2 x minus what is x1? 3T. So it will be y minus 2T equals to -2x plus 6T and y plus 2x equals to 6T and 8T. Equation of the line आ गई हमारे पास. Equation of the line आ गई हमारे पास. कोई problem? Now, if we have to calculate the coordinates of A, अगर A के coordinates हमें चाहिए, A के coordinates निकालने के लिए y क्या हो जाएगा? 0. और B के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए x क्या हो जाएगा? 0. अगर हम यहाँ पर y को 0 रखते हैं तो x क्या आ जाएगा? 4t. और अगर यहाँ पर x को 0 रखते हैं तो y क्या आ जाएगा? 8t. आगे कोऑर्डिनेट्स ये आपको क्या बता रहे हैं जनाब? दिस लेंथ इज 4t एंड दिस लेंथ इज 8t. So अब हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. एरिया इक्वल्स टू, एज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस 40 इंटू हाइट 80. So the answer is 16t square. Any confusion? इक्वेशन ऑफ द लाइन बनाई AB. इक्वेशन ऑफ द लाइन बनाने के बाद जब इक्वेशन आ गई हमारे पास, तो इस इक्वेशन ऑफ द लाइन में जब हमने x को 0 रखा तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स आ गए, जब y को 0 रखा तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स आ गए. दैट्स व्हाई. राइट नाउ अब देखिएगा 40-80 किस तरीके से आया. इक्वेशन ऑफ द लाइन में अगर मैं x को 0 रख दूं तो y क्या आएगा? 80. मतलब अगर x 0 है तो y 80 और अगर y 0 है तो x 4. Now second part is the line through P perpendicular to AB intersect the x-axis at C. Intersect the x-axis at C. Intersect the x-axis at C. The line through P perpendicular to AB intersect the x-axis at C. डायग्राम समझ में आ रही है? जो लिखा हुआ है वही बना है.
Clear? Now, show that the midpoint of PC, show that the midpoint of PC lies on the line y equals to x, lies on the line y equals to x. अब सुनिएगा जनाब, ये क्या है? देखते ही कुछ ऐसा लगता है पता नहीं क्या किस तरीके से शो करना है, लेकिन कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. क्या लिखा हुआ है? y equals to x. Stop working, just look at the board. y equals to x. अगर y 3 होगा तो x कितना होगा? अगर y 7 होगा तो x कितना होगा? 7, राइट? मतलब ऐसा काम कीजिए कि c के कोऑर्डिनेट्स निकालें. क्या करें? c के कोऑर्डिनेट्स निकालें और फिर PC का मिड पॉइंट निकाल लें, और फिर PC का मिड पॉइंट निकाल लें. अगर तो मिड पॉइंट सेम आ जाए 4 4 5 5 7 7 -2 -2, तो प्रूव हो जाएगा कि मिड पॉइंट लाइज ऑन y इक्वल टू x. अगर वो डिफरेंट आ जाए तो प्रूव नहीं होगा. तो इट मींस वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ p, मिड पॉइंट ऑफ PC सेम आने चाहिए. करते हैं आगे स्टार्ट. नाउ अब आप देखिए, वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p. हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं 3t 2t. स्टॉप वर्किंग, लुक एट द बोर्ड. बट वी डोंट हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c. हाउ कैन वी कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c? Do we have the gradient of line AB? Beta, gradient of line AB is -2. Therefore, can I say that the gradient of line PC is 1/2 negative reciprocal, because AB is perpendicular to PC. Red line is perpendicular to green line. So if we have the gradient of red line, which is equals to -2, then the gradient of perpendicular line, gradient of the green line is negative reciprocal, which is which is 1/2. Yes. जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट सामने लिखा हुआ है, हमने डायरेक्ट लिख दिया. जरूरत ही नहीं हुई. ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे तो भी वही आंसर आएगा. ओके, ग्रेडियंट ऑफ पीसी आ गया. कोऑर्डिनेट फ्रॉम वेयर दिस पीसी लाइन क्रॉसेस 3t और 2t आ गया. इक्वेशन ऑफ द लाइन में बना रहा हूं. y - y1 equals to m x - x1. 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2y - 4t equals to x - 3t. क्या बना जनाब? 2y - x equals to t. किस लाइन की इक्वेशन बनकर आ गई है? इक्वेशन ऑफ द लाइन PC. इक्वेशन ऑफ द लाइन PC. अब आप देखिए, ये PC लाइन x एक्सिस को कहां से टकरा रही है? C से. और x एक्सिस को अगर ये C से टकरा रही है तो यहां पर y क्या होगा? 0 होगा. अगर y 0 रखते हैं इसमें तो x कितना आ गया? -t आ गया. x कितना आ गया? -t आ गया. कोई प्रॉब्लम? PC लाइन की इक्वेशन आ गई. इसमें मैंने क्या रखा? y को 0 रखा, तो x की वैल्यू क्या आई? -t. तो C के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हमारे पास, -t, 0. एनी कंफ्यूजन? क्या करने के लिए? C के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं. हमें ग्रेडियंट के फॉर्मूला से तो आ नहीं सकते थे, क्योंकि ग्रेडियंट की वैल्यू है हमारे पास हाफ. ठीक है, ठीक, सही. ओके, सो नाउ P आ गया, C आ गया. अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं जनाब मिड पॉइंट ऑफ PC. मिड पॉइंट ऑफ PC, मिड पॉइंट ऑफ PC क्या होगा? 3t -t डिवाइडेड बाय 2. 2t -0 डिवाइडेड बाय 2. x1 + x2 by 2, y1 + y2 by 2. मिड पॉइंट क्या आया जनाब? 3t - t.
आवाज आई सबकी, 3t माइनस टी, 2t डिवाइडेड बाई 2 टी, 2t डिवाइडेड बाई 2 टी, दोनों सेम आ गए। प्रूव हो गया y इक्वल टू x से पास हो रहा, y इक्वल टू x की लाइन क्रॉस कर रही है मिड पॉइंट ऑफ PC को। Is this clear? Any confusion? Hopefully no. Okay, students, now in question number 10, the line this intersect x-axis, x and y axis at point A and B respectively. Okay. Let's say a line is here. Again, a line is here. Intersect x-axis and y-axis at point A and B respectively. Here it is B, here it is A. Equation of the line is given. Equation of the line is given. X over A, yes, mister. X over A plus y over B equals to 1. अब जरा देखते जाइए आप लोग, अगर मुझे A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो y 0 हो जाएगा, और अगर मुझे B के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो x 0 हो जाएगा। ऐसा ही है। In this line, if y is 0, then x is A. And if x is 0, then y is, after cross multiplication, B. So it means the coordinates of A in this line x over A plus y over B equals to 1. अगर y को 0 रख दें हम, ये सब खत्म, A क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, x इक्वल्स टू A। तो y अगर 0 है तो x A। बेटा ये तो इक्वेशन गिवन है आपको, ठीक है, लाइन की इक्वेशन गिवन है। x ओवर A, अगर ये 0 हुआ इक्वल टू 1 तो x की वैल्यू क्या आ गई? A। अगर हम x को 0 रखते हैं तो y ओवर B इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू क्या आ गई जनाब? द वैल्यू ऑफ y इज B। कोऑर्डिनेट्स आ गए A और B के। एनी कंफ्यूजन रोमान, एनी कंफ्यूजन? अंदर रख लें इसको ना। अब आप देखिए क्या कहा गया, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइज ऑन द लाइन, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइज ऑन अ लाइन, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइज ऑन द लाइन। इक्वेशन 2x plus y equals to 10। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करना है, सही। अब आप देखिए, ये अगर मिड पॉइंट में निकालना चाहूं तो x1 plus x2 by 2, 0 plus a divided by 2 will give you a upon 2, b plus 0 divided by 2 will give you b upon 2। ऐसा ही है। मिड पॉइंट क्या आ गया? a upon 2 and b upon 2। एनी कंफ्यूजन? नो। हमें a और b की वैल्यूज निकालना है। अगर हमें a और b की वैल्यूज निकालना है तो वी मस्ट हैव टू इक्वेशंस जिसमें a और b आए, ताकि साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम a और b की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकें। क्या मैं, ये जो ग्रीन लाइन है ये a अपॉन 2 b अपॉन 2 से पास कर रही है, मैं अगर इस ग्रीन लाइन की इक्वेशन में 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 x की जगह रख दूं a अपॉन 2 और y की जगह रख दूं b अपॉन 2, तो कोई प्रॉब्लम? नो, दिस इज अलाउड। 2 से 2 कैंसिल आउट, a इक्वल टू 10 माइनस b अपॉन 2। a की वैल्यू क्या आई? 10 माइनस b अपॉन 2। बट वी डोंट हैव एनी अदर इक्वेशन। कोई और इक्वेशन होगी तो हम उसमें a को रख सकेंगे। उसके लिए हमें क्या कहा गया? ab equals to 10 means the distance ab equals to 10। अब मैं इस पर वर्किंग कर रहा हूं
by a different color. AB equals to 10. AB का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमें. AB का डिस्टेंस y2 minus y1 0 minus b whole square plus x2 minus x1 whole square equals to 10, squaring both the side. So b square plus a square equals to 100. B square plus a square equals to 100. कोई प्रॉब्लम? मजीद आगे चलते हैं जनाब. क्या हमारे पास a की वैल्यू 10 माइनस बी अपॉन 2 है? अगर मैं यहाँ a की जगह रख दूं b स्क्वायर प्लस a की जगह 10 माइनस बी अपॉन 2 रख दिया हमने, होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100. बी स्क्वायर प्लस, अब तो सिंप्लीफिकेशन है, अगर 2 से एलसीएम लिया जाए तो ये क्या हो गया 20 माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100. मजीद आगे वर्किंग कर रहे हैं जनाब. हमने ए को सब्जेक्ट बना के ए की जगह पर रख दिया, बी आ जाएगा, फिर हम वर्किंग करें. नाउ अब क्या हुआ जनाब, बी स्क्वायर प्लस, अगर ऊपर ब्रैकेट में हम लिखते हैं 20 माइनस बी का होल स्क्वायर तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 100. बाय टेकिंग एलसीएम विद 4 इट विल बी 4b स्क्वायर प्लस, अगर इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया जाए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू, नीचे वाला जो 4 है क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना 400. b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 5b स्क्वायर माइनस 40b, 400 कैंसिल आउट इक्वल्स टू 0. b कॉमन 5b माइनस 40 इक्वल्स टू 0. एक b की वैल्यू आ गई 0, एक b की वैल्यू आ गई 40 डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ 8. b को 8 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो a कितना आ जाएगा जनाब, what is the value of a? The value of a will be 10 minus 8 upon 2 and 2 4s are 8, so the value of a is 6. Therefore the value of a is 6 and the value of b is 8. 0 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि 0 नहीं हो सकता b. अगर b 0 हो जाए, ऊपर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में जरा देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है a and b are positive constants. They are positive constants, so neglect 0. Is this clear? Any confusion? That's great. Complete the question. The diagram shows the trapezium ABCD with all the things. Find the equation of AD. We need to calculate the equation of AD. AD की equation हमें calculate करना है. For finding out the equation of any line, we must have gradient and a coordinate from where the line crosses. We have the coordinate, but we don't have the gradient of line AD. But are we able to calculate the gradient of AB? In the first part, if I calculate the gradient of line AB, so it will be y2 minus y1 minus 3 minus 6 divided by x2 minus x1 5 minus 2. So it will be minus 9 over 3 and the gradient is minus 3. अगर इसका gradient minus 3 है तो बेटा इसका gradient क्या हो जाएगा 1/3. So use this gradient. Y minus y1 equals to m x minus x1. 3 cross multiply 3y minus 18 equals to x minus 2. So 3y equals to x plus 16 is the equation of line AD. Any confusion? Clear? Voice clear? Now, find by calculation the coordinates of D. How can we calculate the coordinates of D? देखिएगा, AD line और CD line दोनों आकर D पर टकरा रही हैं. Simultaneously solve कर लें और D की coordinates निकाल लें. Equation of the line AD is here.
equation of the line AD is here. For the second part, calculate the equation of line CD. What is the gradient of CD? Gradient of CD is also -3 because AB and CD are parallel lines. For parallel lines, gradients are same. By using y minus y1 equals to m x minus x1. So y minus 3 equals to minus 3x plus 24 and y equals to minus 3x plus 27. This is the equation of line CD. Solve them simultaneously, CD and AD. Y की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूं AD की इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा जनाब? 3y की जगह पर -3x plus 27 equals to x plus 16. This one will be -9x. 27 multiplied by 3 is 81 equals to x plus 16. 9x, 10x equals to 81 plus 16. Minus, so it will be 65. What is the value of x? 6.5 is the value of x. What is the value of y? 7.5 is the value of y. These are the coordinates of D. 6.5, 7.5. Any confusion? Clear? आगे देखिएगा जरा. E is the point such that ABCE is a parallelogram. Parallelogram बना रहे हैं, आप देखिएगा जरा. ABCE is a parallelogram. It will be something like this. ये E बन गया. तो ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया. इन द थर्ड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ BE. मैं एक पैरेललोग्राम यहां पर बना रहा हूं. यहां पर मैं एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं. लेट्स से इसको मैंने कहा A, इसको कहा B, इसको कहा C और इसको कहा E. वो पैरेललोग्राम वहां से उठा के यहां बना लिया. सही है. Find the length of BE. We need to calculate the length of BE. What are the coordinates of A? 2, 6. What are the coordinates of B? 5 and -3. What are the coordinates of C? 8 and 3. E के coordinates नहीं पता. अगर E के coordinates पता चल जाएं तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम BE की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन हमें ये मालूम है जनाब कि अगर मैं A को C से ज्वाइन करूं और E को B से ज्वाइन करूं, फर्स्ट क्लास में बताया था, तो डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होता है. मैं मिड पॉइंट कैलकुलेट कर रहा हूं डायरेक्टली. तो मिड पॉइंट क्या आएगा जनाब? AC से मिड पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं. 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2 5. 6 + 3 डिवाइडेड बाई 2 9/2. आ गया मिड पॉइंट? आ गया मिड पॉइंट? Any confusion in this midpoint? No. Clear, boys? After the midpoint, I am calculating the coordinates of E because the midpoint will remain same. अगर हम B से E तक आते हैं जब भी, by using x equals to x1 plus x2 by 2. What is the value of x? 5. What is x1? 5. What is x2? What is x2? x2 is a divided by 2. 2 5s are 10. A की वैल्यू कितनी आ गई? A की वैल्यू 5 आ गई. A की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई. Now y equals to y1 plus y2 by 2. What is y? 9/2. What is y1? -3. What is y2? B divided by 2. 2 and 2 cancel out. What is the value of B? 12. E के कोऑर्डिनेट्स आ गए जनाब 5, 12. क्या आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए BE की लेंथ निकाल सकते हैं?
तो बी इक्विवेलेंट डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली कितनी आई है 515 15 is the length of PE by using distance formula. कर सकते any confusion? Is this clear? Is this clear? That's great.